Hello all, welcome to this session of previous year questions on equilibrium. Let us start from NEET 2019. NEET 2019 में क्वेश्चन था pH of a saturated solution of CaOH by 2 is 9. The solubility product KSP of CaOH by 2 is. तो इस क्वेश्चन में pH दिया हुआ था that is equals to 9, तो pOH will be equals to 14 minus 9, that will be equals to 5. And therefore, concentration of OH negative will be equals to 10 to the power minus 5 molar. अब क्योंकि CaOH by 2 on dissociation will give Ca2 plus twice OH negative. So इसके लिए this should be 2S and this should be S. But concentration of OH negative equals to 10 to the power minus 5 equals to 2S. Therefore, concentration of Ca2 plus should be equals to 10 to the power minus 5 divided by 2. And therefore, KSP should be equals to concentration of Ca2 plus into concentration of OH minus square. That will be equals to 0.5 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 5 square, which will be equals to 0.5 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 10. That will be equals to 0.5 into 10 to the power minus 15. और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1. Now let us take questions from NEET 2018. इसमें 3 questions आए थे. First one is, which of the following conditions will favor maximum formation of the product in the reaction? A2 gas plus B2 gas gives X gas. Delta H equals to X kilojoules. Number 1 was high temperature and high pressure. Number 2, low temperature and low pressure. Number 3, low temperature and high pressure. And high temperature and low pressure. तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ था हम लोगों को, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक है ना, जो डेल्टा एच वैल्यू है दैट इज माइनस एक्स. सो दिस विल बी डेफिनेटली फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर. Similarly, दूसरा वाला चीज क्या दिया हुआ है, तो if we just look at the reaction, reactant to product जो है, there is compression. So if the reactant to product is compression, इसका मतलब number of the moles on the reactant side are greater as compared to the number of the moles on the product side. So this should be favored by increase in pressure. So इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए, और दिस रिएक्शन विल बी ऑलवेज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. सो दैट इज ऑप्शन 3. इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3. अब नीट 2018 में इक्विलिब्रियम पे जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो देखते हैं. इसमें क्वेश्चन था द सोल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज 2.42 into 10 to the power minus 3 grams per liter at 298 Kelvin. The value of its solubility product KSP will be, और मोलर मास दिया हुआ था 233 grams per mole. Now जो सोल्युबिलिटी है वो सोल्युबिलिटी दिया हुआ था S was equals to 2.42 into 10 to the power minus 3 gram per liter. Now this has to be converted into moles per liter, तो हम लोग उसको divided by molecular mass करेंगे. What's the molecular mass of BaSO4? 233. So then it will be 2.42 into 10 to the power minus 3 divided by 233, and then this will be equal to moles per liter, and the answer will be 1.04 into 10 to the power minus 5 moles per liter. Again, जो BaSO4 है वो BaSO4 क्या देगा, BaSO4 will give you
Ba++ and SO4 2 minus. So that means to say what? कि ये S है, ये S है. So what will be KSP? KSP will be equal to S square, which will be equal to, now the solubility is given 1.04 into 10 to the power minus 5 square, and that will be equals to 1.08 into 10 to the power minus 10 mole to the square लीटर टू द पावर -2, और इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3. नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 जो इक्विलिब्रियम पे नीट 2018 में आया था. थर्ड क्वेश्चन था फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस, और ये मिक्सचर्स दिए थे, सॉल्यूशंस दिए थे A B C D, और आपको पूछा था pH ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1. सो बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, मतलब एक एसिड है दूसरा बेस है, और ये यहाँ पे अगर सपोज देखेंगे कि मोलारिटी विल बी इक्वल टू नॉर्मलिटी, क्योंकि HCl विल बी अ मोनो बेसिक एसिड एंड NaOH विल बी इक्वल टू मोनो एसिडिक बेस. तो अगर सपोज हम देखें तो वी कैन यूज द फॉर्मूला, हम यूज कर सकते हैं बेटा फॉर्मूला N1V1 minus N2V2 equals to N3V1 plus V2, और N3 equals to modulus of N1V1 minus N2V2 upon V1 plus V2. अब हर एक को अगर सपोज हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या वैल्यूज निकलता है? तो A के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकलेगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि इसमें HCl ज़्यादा है, सभी में HCl ज़्यादा है, सिर्फ लास्ट वाले में D में जो है दे आर इक्वल, सो देन इट बिकम्स 0. B में H प्लस निकलेगा 1 इंटू 10 टू द पावर -2, C में निकलेगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2, और N3 विल बी इक्वल टू 0 इन D ऑप्शन. So if we take C condition N3, so concentration of H plus will be equals to 10 to the power -1. Now pH should be equals to minus log to the base 10 concentration of H plus, which will be equals to minus log to the base 10 to the power -1, and should be equals to 1. So C के लिए हमारा pH जो है वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, and that should be your answer option 3, that is C. So for C the pH will be equals to 1. Now let's take questions from NEET 2017. इसमें भी 3 questions आए थे. Question number 1 है a 20-liter container at 400 Kelvin contains CO2 gas at pressure 0.4 atmosphere and excess of SRO. Neglect the volume of SRO. The volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. The maximum volume of the container when the pressure of CO2 attains its maximum value will be. Given that SrCO3 solid gives SRO solid plus CO2 gas. Kp दिया हुआ था 1.6 atmosphere. इसमें हम लोग पहले इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. अब क्योंकि PV इक्वल्स टू nRT है, तो N विल बी इक्वल्स टू PV बाई RT. सो N विल बी इक्वल्स टू P कितना दिया हुआ है? 0.4 एटमॉस्फेयर into initial volume was 20 divided by RT. Let us just keep it like this only. Similarly, from the equation अगर सपोज हम लोग देखें तो SrCO3 सॉलिड है, SRO सॉलिड है, तो हमको समझ में आएगा कि Kp will be equals to PCO2. इसका मतलब PCO2 should be equals to Kp का value which is being given to be 1.6 atmosphere. So this should be the maximum pressure of the CO2 when it attains equilibrium. To calculate the maximum volume, again we use the ideal gas equation PV equals to nRT. तो n जो पहले था वही अभी भी रहेगा. दिस n विल बी द कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि द वेसल वाज सील्ड और इसमें से कुछ भी बाहर नहीं गया, तो n विल बी कांस्टेंट. तो अभी v विल बी इक्वल्स टू nRT अपॉन p, जहाँ पे p शुड बी द मैक्सिमम. सो मैक्सिमम वॉल्यूम शुड बी एट मैक्सिमम प्रेशर p. नाउ
दिस V max will be equals to n का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. n का वैल्यू इज 0.4 into 20 divided by RT into RT by P. So this will be RT gets cancelled. So 0.4 into 20 divided by 1.6. So V should be equals to the maximum amount of the volume should be 5 liters. So that should be our answer. यानी हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1. नीट 2017 का दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि था The equilibrium constant of the following are N2 plus thrice H2 gives twice NH3 K1, N2 plus O2 gives twice NO K2, H2 plus half O2 gives H2O K3. The equilibrium constant K for the reaction twice NH3 plus 5 by 2 O2 gives twice NO plus thrice H2O will be. Let the given equilibriums be numbered as 1, 2 and 3. अब ये जो required है उसके लिए हमको 1 को रिवर्स करना पड़ेगा. द रीजन इज दैट बिकॉज NH3 हम लोगों को रिएक्टेंट साइड में चाहिए. सो रिवर्सिंग 1 प्लस 2 को ऐड कर देते हैं एंड प्लस 3 इंटू 3 थर्ड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि थ्राइस H2O चाहिए. सो लेट अस डू दैट. वन विल गेट ट्वाइस NH3 गिव्स N2 प्लस थ्राइस H2. तो क्योंकि रिवर्स हुआ है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट होगा. N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO वैसे के वैसे है तो दैट विल बी K2 ओनली. और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले को थ्राइस H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स थ्राइस H2O. तो देन इट विल बी रेस्ट टू द पावर नंबर ऑफ टाइम इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड. सो K3 क्यूब हो जाएगा. अब अगर सपोज हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा ट्वाइस NH3. N2 कैंसिल हो जाएगा, H2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस O2 प्लस 3/2 O2 इज 5/2 O2 gives twice NO plus thrice H2O. और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K will be equals to, क्योंकि we are adding this there will be a multiplication. So 1 by K1 into K2 into K3 cube. So your answer should be K2 into K3 cube by K1. Hence answer 2. Now let us see third question जो 2017 में आया था. इसमें थर्ड क्वेश्चन आया था concentration of Ag plus ions in a saturated solution of Ag2C2O4 is 2.2 into 10 to the power minus 4 moles per liter. Solubility product of Ag2C2O4 is. So the sparingly soluble salt Ag2C2O4 will actually give the ions twice Ag plus and C2O4 2 minus. इसका मतलब whatever may the initial concentration be in the saturated solution, this will be 2s and this will be s. अब हमको 2s का वैल्यू दिया हुआ है and this 2s is being given to be 2.2 into 10 to the power minus 4 moles per liter. Therefore, concentration of C2O4 2 minus will be equals to 2.2 into 10 to the power minus 4 divided by 2, and that will be equals to 1.1 into 10 to the power minus 4 moles per liter. Now KSP will be equals to concentration of Ag plus square into concentration of C2O4 2 minus, that will be equals to 2.2 into 10 to the power minus 4 square into 1.1 into 10 to the power minus 4, that will be equals to 4.84 into 10 to the power minus 8 into 1.1 into 10 to the power minus 4, that will be equals to 5.324 into 10 to the power minus 12. Hence the answer to this question should be
ऑप्शन 4 होना चाहिए हमारा आंसर। 5.3 इंटू 10 टू द पावर -12। क्वेश्चन देखते हैं नीट 2016 फेज 1 में। इसमें दो क्वेश्चंस आए थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन 1 था My and My3, two nearly insoluble salts, have the same Ksp values of 6.2 into 10 to the power -13 at room temperature. Which statement would be true in regard to My and My3? 1. The molar solubilities of My and My3 in water identical. 2. The molar solubility of My in water is less than that of My3. 3. The salts of My and My3 are more soluble in 0.5 molar Ky than in pure water. And 4. The addition of the salt of Ky to the solution of My and My3 will have no effect on their solubilities. तो पहले हम दोनों की solubility की values calculate करते हैं क्योंकि दोनों का Ksp values same है. For example, My will give M plus Y minus. If this is S and S, so then Ksp will be equals to S square, or S will be equals to Ksp to the power 1 by 2. That will be equals to 6.2 into 10 to the power -13 to the power 1 by 2. Now similarly, if we just talk about Ny3, Ny3 on dissociation will give N3 plus thrice Y minus. So if this is S, this will be 3S. So Ksp will be equals to S into 3S cube. That will be equals to 27S to the power 4, or S will be equals to Ksp upon 27 to the power 1 by 4. That means 6.2 into 10 to the power -13 divided by 27 to the power 1 by 4. Now by observation it is clear that the solubility of Ny3 is greater as compared to that of the solubility of My. और if we just want to have the real values, तो उनकी real values क्या आएगी? 7.9 into 10 to the power -7 moles per liter आएगा My के लिए, जबकि solubility आएगी Ny3 के लिए 3.89 into 10 to the power -4. So anyways, this solubility will be greater. So if we just look at the option second, the molar solubility of My in water is less than that of Ny3 is a correct answer. So हमारा आंसर होना चाहिए option 2. Let us look at the second question in NEET UG 2016. Consider the following liquid vapor equilibrium. Liquid gives vapor. Which of the following relations is correct? Now the relation between vapor pressure and temperature should be LNP equals to minus delta HV divided by RT plus constant. जहाँ पे P should be the vapor pressure and delta HV should be the heat of vaporization. Now let's differentiate this equation with respect to temperature. Therefore, dLNP by dt should be equals to minus delta HV by R, constant है, और 1 by t का डेरिवेटिव आएगा -1 by t square. So we get dLNP by dt equals to plus delta HV upon RT square, यानी हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1. Now let us take questions from NEET 2016 phase 2. इसमें 4 questions आए थे और ये है number 1, the percentage of pyridine C5H5N that forms pyridinium ion C5H5N plus H in 0.10 molar aqueous pyridine solution Kb equals to C5H5N equals to 1.7 into 10 to the power -9 S. तो इसके लिए हम लोगों को निकालना है पता परसेंटेज अल्फा. हमें पता है कि अल्फा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Kb by C.
So substituting the values, we have 1.7 into 10 to the power minus 9 divided by C. Concentration is 0.1. So this becomes under root of 1.7 into 10 to the power minus 8, which will be equals to 1.3 into 10 to the power minus 4. Now, percent alpha will be equals to alpha into 100. So that will be equals to 1.3 into 10 to the power minus 4 into 100 will be equals to 1.3 into 10 to the power minus 2. That will be equals to 0.013%. और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2. सेकेंड वाला क्वेश्चन था द solubility of AgCl solid with solubility product 1.6 into 10 to the power minus 5 in 0.1 molar NaCl solution would be. तो इसका मतलब हम लोगों को AgCl और NaCl दोनों का डिसोसिएशन देखना होगा. AgCl will give Ag plus plus Cl minus. यहाँ पे there should be the concentration SS because solubility is S. And let concentration of NaCl be equals to C. So NaCl is a strong electrolyte and that will give Na plus and Cl minus. So initially अगर ये C00 है तो finally this will become C and this will entirely converted into the products. So that means to say what? अभी Cl का common ion effect है, यहाँ common ion हो गया. Now the concentration will be greater of NaCl as compared to that of solubility, and hence we say that now the concentration of Cl negative is equals to C plus S. We neglect S and we call nearly equals to C. और इसीलिए now the ionic product Q that should be equals to KSP should be equals to concentration of Ag plus into concentration of Cl negative. Therefore, KSP must be equals to S into C क्योंकि Ag plus का तो S ही है लेकिन Cl minus का अभी क्या हो गया बेटा C हो गया. So therefore S will be equals to KSP upon C. Now the concentration of NaCl is being given that is 0.1. So that will be equals to KSP दिया था 1.6 into 10 to the minus 10 divided by 0.1 which will be equals to 1.6 into 10 to the power minus 9 molar. And that's why the answer should be option 2, that is 1.6 into 10 to the power minus 9. Question 3 था NEET 2016 में इक्विलिब्रियम से कि बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल. नाउ ये क्वेश्चन जो है पी ब्लॉक में भी हो सकता है, ये क्वेश्चन जो है आपका सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी हो सकता है, बट जस्ट टेक इट ओवर हियर. बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज हमको पता है बोरिक एसिड इज BOH/3. नाउ व्हेन वी से BOH/3 it is electron deficient species. So whenever it reacts with water, it takes in one OH minus और ये बनाता है BOH/4 minus plus H plus. So this proton is being released. So it takes in OH minus because it is electron deficient species. और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए option 3. It accepts OH negative from water releasing proton and that is the reason why it is acid. इसमें फोर्थ क्वेश्चन था which of the following fluoro compound is most likely to behave as Levy's base. अब ये क्वेश्चन पी ब्लॉक में भी हो सकता है, but then we'll again cover it over here. हम कहते हैं कि भाई वो compound will behave as Levy's base which can donate the lone pair of electrons. So Levy's bases
are electron pair donor. Now because PF3 contains a lone pair of electron, and that's why it behave as Lewis base, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2. Let us take the questions from AIPMT 2015. AIPMT 2015 में भी 3 क्वेश्चन अपीयर हुए थे इक्विलिब्रियम के. Let's look them one by one. Question 1 था, the KSP of Ag2CrO4, AgCl, AgBr and AgI are respectively 1.1 into 10 to the power minus 12, 1.8 into 10 to the power minus 10, 5.0 into 10 to the power minus 13 and 8.3 into 10 to the power minus 17. Which one of the following salts will precipitate last if AgNO3 solution is added to the solution containing equal moles of NaCl, NaBr, NaI and Na2CrO4? तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जिसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा उसका जो है प्रेसिपिटेट लास्ट बनेगा. सो इफ यू जस्ट गो फॉर दैट, हम लोग हर एक का सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. जैसे Ag2CrO4 gives twice Ag plus CrO4 2 minus यानी 2s और s बनेगा. सो KSP will be equals to 2s का whole square into s. So s will be equals to KSP by 4 to the power 1 by 3. इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आना चाहिए 6.5 into 10 to the power minus 5. सिमिलरली हम AgCl क्या कैलकुलेट करते हैं? सो क्योंकि AgCl will give Ag plus and Cl minus, so KSP will be equals to S into S, that is equals to S square, या S will be equals to under of KSP, तो उसका वैल्यू आएगा 1.34 into 10 to the power minus 5 मोलर. अब हम लोग AgBr के लिए कैलकुलेट करते हैं. AgBr के लिए वैल्यू आएगा AgBr gives Ag plus Br minus, so KSP will be equals to S square, yeah, S will be equals to KSP to the power 1 by 2, that will be equals to 7.07 into 10 to the power minus 7 molar. Now last, let us calculate for AgI. In AgI will give Ag plus I minus, यानी S आएगा solubility, तो KSP will be equals to S square, या S will be equals to KSP to the power 1 by 2, तो इसका आंसर आएगा 9.11 into 10 to the power minus 9. Now out of all this, the solubility will be highest for Ag2CrO4 और इसीलिए उसका precipitation will take place at last, और इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3, that is Ag2CrO4. The second question in AIPMT 2015 was, if the value of an equilibrium constant for a particular reaction is 1.6 into 10 to the power 12, then at equilibrium the system will contain. अब हम लोग को इसके अंदर equilibrium constant दिया हुआ, let's say K is equals to 1.6 into 10 to the power 12, so which is very high, बहुत ज़्यादा है. तो अगर सपोज बहुत ज़्यादा है, कोई भी अगर रिएक्शन रहेगा A gives B, तो अगर सपोज K is too high, then the reaction will be more towards completion. That means it will mostly contains the products, और इसीलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए इसके अंदर, आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2, मोस्टली द प्रोडक्ट्स. थर्ड क्वेश्चन था AIPMT 2015 में, which of the following statement is correct for reversible process in state of equilibrium? Now we know that, हम लोग को पता है कि डेल्टा G should be equals to डेल्टा G naught plus 2.303 RT log K. Now at equilibrium delta G should be equals to 0, and therefore delta G naught will be equals to minus 2.303 RT log K. That means हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2. That's all in this session. Thanks for watching. Let's meet in next session.